Hello everyone, hope you are all fine and doing great. Welcome to my classes, my dear students. Today I am going to start a very important topic of genetics. This topic is important for both board as well as NEET examination. In 2024 and 2025, one question had come in NEET examination from this topic. So, be attentive in the class and do concentrate. Now, pedigree analysis or pedigree study. Pedigree means family tree, or you can say वंशावली, एक वंश का record है. So, pedigree analysis is a method, or it is a method to study the inheritance of a particular or specific genetic trait in a human family for several generations. It means how the trait or genetic disorder or genetic disease is transferred from the parents to the children and then to the grandchildren. Means एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को. This pedigree analysis is represented through a diagram. It is represented through a diagram using specific symbols, which is often or generally called as family tree or pedigree chart. Do you understand? So, why we study pedigree? What is the importance of pedigree in a human family? With the help of pedigree, my dear students, we can find out the presence or absence of a particular genetic disorder in a human family. Clear? Now, this method, pedigree method, was proposed after the rediscovery of Mendel's work. This method follows the Mendelian principles of inheritance, that is Mendelian pattern of inheritance, but common Mendelian experiments are not possible in human beings. Why? Why they are not possible, my dear students? Because control crosses cannot be performed in human beings, which is used to trace the inheritance of a particular genetic disease or disorder or abnormality in a human family. The main significance or importance of pedigree analysis is your genetic counseling. Means pedigree study is useful to the genetic counselors or geneticists to advise the intending couple or married couple about the possibility of having their children with genetic defects or genetic disorder like hemophilia and color blindness. At the same time, my dear students, it also gives information about the advantages and disadvantages of marriages between close relatives. Mendelian disorders are due to a single gene mutation. Another important point you can remember, the pedigree study or analysis was first proposed by an eminent geneticist or scientist, you can say, that is Sir Francis Galton, who is said to be the father of eugenics. Eugenics means science of well-born. My dear students, have a look towards the board. I have explained all the symbols here. Square represents your normal male. The spherical or circle represents a normal female. Quick, have a look. The rhombus, that is your symbol, represents or denotes sex unspecified or unknown. Next, when all these three symbols are made dark or solid, then represent your affected individuals. Now this male and female joined by one horizontal line, then this mating or marriage. And same thing next to this. Have a look. Male and female is there.
They're joined by two horizontal lines. Then this is mating or marriage between relatives, which is called consanguineous marriage. Now next is rhombus sign. A number is mentioned within it, 5. That is 5 unaffected individual. The number may be any. You can write within it. Now this is circle represents your female. You know. Now within the circle there is a dark dot in the center. Then it represents carrier female of sex-linked recessive trait, my dear student. Do you understand? Now next is your again male and female. This is half shaded. Then represents your heterozygous or autosomal recessive trait. Now come to the extra symbols are there. Suppose this is mating symbol is there or marriage. When you are putting one line over it, the mating line, then is divorce. Got it? Now come to the right hand side, my dear children. The square male, circle female. When you are putting one line over it, then it is your death of the offspring or individual or death of the individuals. That is male and female. Now this is again male and female. You are putting bracket to male and female, then adopted children. What is stillbirth? That is this symbol. Stillbirth means death before birth. Now these are the identical twins. Identical matlab same. So in identical twins, both either will be male or female. Clear? Now sex will be same. At the same time, as because they are developing from the same zygote, that's why their external features, that is morphology, also to say phenotypes, and genetic composition, that is genotype, will be same. The IQ level will also be same, behavior will be same. Total 100% similarity is there. Also, we can say that is DNA profiling, that is DNA fingerprint also will be same. Clear or not? So very difficult to identify the criminals, those who are identical twins, because they have got the same DNA fingerprint. Now, dizygotic twins, also called fraternal twins, I written, or non-identical, they're different. They develop from two zygotes. Sex determination takes place twice. So there is every chance one will be male, other will be female. Different sexes born at the same time. Both can be a female, both can be male. It happens. But as because they're developing from two different zygotes, that's why the dizygotic twins are non-identical twins. They're not similar in any aspect. That is, the in external features and phenotype, they'll be different. Also in the genotype, after knowing all these symbols, my dear students, let us construct a pedigree or family tree or pedigree chart. This is the diagram of the pedigree. Here the above parents are there. You know, parents above, it is written. Then join, you know, this is mating sign, joined by horizontal line, I have explained already. The children are or progeny or offspring below to the parents, represented by vertical line. Now the children numbering is done 1, 2 as per the order of birth. This is the first child, this is the second child. So as per the order of birth, they are represented from left to right. Now these are the generations, my dear children. Generations of a human family. First generation parents, second generation children. There will be third generation in Roman letter. That is your grandchildren, fourth generation grandchildren. So in one family, there is only one pedigree is there for representing the different generations which are represented in Roman numerals. Very, very important. Now come to the simple pedigree. Parents are above, one male child affected with disorder or disease. Now children come to the proband. After knowing all the symbols now or pedigree, you see what is proband. Proband is the first person detected with disorder in the family. First detected person having disorder in the family. Clear or not? So the family members may be your male or female. When it is male, when it is detected in male, a disease male is said to be propogitus, and the disease is first detected in female, then the diseased female is called propogita. After discussing all these symbols and pedigree, now come to the probable question or expected question in NEET and board. Have a look towards the board. From symbols, you see, NEET 2024, one symbol had come, with consanguineous marriage or mating between your relatives. This is very important. Next,
Next year also, consecutive years, you see 2025, this year you see, that is, this question has come, that is carrier female for sex and recessive traits, but the symbol had not come directly, but it was used in one of the questions of NEET examination 2025. Next, come to this, your pedigree. So one question is asked, how many genetic traits are being studied in a single pedigree? So in one pedigree, only one human genetic trait or genetic disease is studied per human family. That is for one human family for several generations. So what is the question? Very important is how many genetic traits are studied in one pedigree. So answer will be only one. Or to find out the type of disorder in a given pedigree that comes in examination of CBSE and NEET examination. To remember all the clues or possibilities so that you can solve the questions of pedigree. 1. For recessive disorder, my dear children, for recessive disorder in the pedigree, when you see that is the disorder is skipping the generations. That is, in one generation the disorder is there and the next generation we don't see the disorder. Clear or not? Or in the first generation there is no disorder, but the second generation we are getting the disorder. So such type of tendency is called your what? Discontinuous trend or skipping tendency. When it is present, then it is recessive. Now second point, you see, just reverse. For dominant disorder, that is skipping tendency absent, means the disorder will be seen in every generation. That is continuously in every generation the disorder is there. So that then the pedigree will be opened. Now have a look towards the board. I have written the note. See this. For recessive disorder, my dear students, every generation में देखो skip कर रहा है. एक generation में disorder है, second में नहीं है. यहाँ देखो first generation में there is no disorder. Parents are normal, but the children are disease. So there is skip कर रहा generation. हर एक generation discontinuous है, continuous नहीं है, skip कर रहा है हर एक generation. तो whole pedigree को देखना होगा और skip कर रहा है तो recessive होगा. Now डोमिनेंट जस्ट इसका रिवर्स, अगर स्किप नहीं कर रहा है, स्किपिंग टेंडेंसी एब्सेंट, देखो लिखे स्किपिंग टेंडेंसी एब्सेंट होगा, कंटिन्यूअस डिसेंट होगा, तो अब क्या हो जाएगा? सो वेदर द डिसऑर्डर इज ऑटोजोमल, लिसन टू मी केयरफुली, और सेक्स लिंक, देन फादर इज मेनली, इसीलिए है कि फादर अफेक्टेड, सन्स एंड डॉटर अफेक्टेड इन इक्वल फ्रीक्वेंसी, ऑटोजोमल. ये दोनों के लिए पॉइंट कॉमन है, लेकिन एक में स्किप करेगा तो रिसेसिव ऑटोजोमल रिसेसिव, स्किप नहीं करेगा ऑटोजोमल डोमिनेंट. और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑटोजोमल डोमिनेंट याद रखोगे बेटा कि ऑटोजोमल डोमिनेंट में पेरेंट्स मस्ट बी अफेक्टेड होगा. ऑटोजोमल डोमिनेंट, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन नॉट पास द ट्रेट. नाउ हैव ए लुक टुवर्ड्स द बोर्ड. ये देखो, whether autosomal responsible, mainly consider father is considered. Affected father से sons daughter affected equal frequency में है तो autosomal. एक फिगर हम दे दें, नॉर्मल फिगर देखो, father affected, sons and daughter affected equal frequency. It is only the pedigree of autosomal. Now I have not given the autosomal dominant, autosomal recessive separate करके, बाद में पढ़ेंगे इसको, NCERT में दिया हुआ है. When we will be discussing questions, that time I will draw the pedigrees सेपरेटली. नाउ ये जो ऑटोजोमल कॉमन हो उसमें देखिए ऑटोजोमल दो टाइप का, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट. ऑटोजोमल रिसेसिव तो पॉइंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ ली कि ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या करेगा? स्किप करेगा, जनरेशन स्किप कर. इसका एग्जांपल याद रखो, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, देन योर थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस. ये हम लोग का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है. उसमें से अगर पूछता है क्लासिकल एग्जांपल क्या है, अभी बताए, सिकल सेल एनीमिया. और एक कॉमन पॉइंट इसमें आपको बोले थे, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मेनली वी गेट मोर इन मैरिजेस बिटवीन रिलेटिव. नाउ कम टू ऑटोजोमल डोमिनेंट. ऑटोजोमल डोमिनेंट जो डिसऑर्डर होगा,
क्या बोले थे, स्किप नहीं करेगा, कंटिन्यूअस देखेंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखना है एनसीईआरटी वाला, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और एक आपको अभी बताया दैट इज पॉलीडेक्टाइल। लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले थे कि ऑटोजोमल डोमिनेंट में अनअफेक्टेड पेरेंट कभी भी ट्रेट को ट्रांसफर नहीं करेगा। सो पेरेंट्स मस्ट बी अफेक्टेड इन ऑटोजोमल डोमिनेंट। सेक्स लिंक में एक्स लिंक देखो, एक्स लिंक डिसऑर्डर माय डियर चिल्ड्रन, फर्स्ट लिसन टू मी केयरफुली। एक्स लिंक बोलो, वाई लिंक बोलो, ऑटोजोमल बोलो, हु इज कंसिडर्ड, फादर इज कंसिडर्ड। तो एक्स लिंक में भी फादर इज कंसिडर्ड, अफेक्टेड फादर और फादर अफेक्टेड, ऑल डॉटर्स अफेक्टेड, सन्स नॉर्मल होगा, तो दैट इज एक्स लिंक्ड व्हाट, डोमिनेंट। इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। डोमिनेंट काहे होता है, दैट इज स्किप नहीं करेगा, कंटिन्यूअस होगा। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद अपन देखें कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या होगा ना। यहां भी फादर इज अफेक्टेड, बट हियर द ऑल डॉटर्स आर योर कैरियर्स होगा एंड सन्स नॉर्मल होगा, देन इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ऑल डॉटर्स अफेक्टेड, देखो बेटा बढ़िया कर ध्यान से दो, सन्स नॉर्मल, देन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। डोमिनेंट काहे होता है, स्किप नहीं करेगा, कंटिन्यूअस जनरेशन में होगा। देखो इसका फिगर, फादर अफेक्टेड, ऑल डॉटर्स अफेक्टेड, सन्स आर नॉर्मल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओवर। सो इसमें एग्जांपल आपका सूडो रिकेट एंड defective enamel of teeth, but it is very clear that this X-linked dominant is not there in NCERT, neither the examples are there. Clearer? So this X-linked dominant examples are not there, so you can leave. But better to remember, if questions come, then pseudo ricket, it will be helpful to eliminate the wrong option. Pseudo ricket, pseudo मतलब क्या है, false. Ricket किससे होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, but pseudo ricket is vitamin D resistant ricket, female. Now in both the cases you see the trait is transferred from the father, okay, from the father to the daughters. Either they are making the daughters affected or making the daughters your carrier, but the trait is being transferred from the father to the daughters, not to the son. Clear or not? Father cannot transmit, very very important, father cannot transmit the X-linked disorder to the sons, but father transmits the X-linked disorder to the. So here this type of inheritance, it is showing criss-cross inheritance, means male to female, father to daughter, clear, and female to male, that is mother to son. So father to daughter and mother to son. This is type of cross is called criss-cross inheritance. So X-linked recessive traits which is there in NCERT like hemophilia, color blindness, does it show your criss-cross inheritance? Yes sir. Now lastly you are coming to Y-linked. Y chromosome and X chromosome both are non-homologous chromosome, my dear children. X is, you have seen the diagram in sex determination chapter में देखोगे, X और Y दोनों को डायग्राम दिया हुआ है. X is little bit bigger than Y chromosome. That's why they are non-homologous chromosome. And Y chromosome का जो है उसमें SRY gene रहता है. Y is only present in male. The genes present in Y are called Hollandric genes, only in male. तो SRY genes कहाँ रहेगा? Y में. Y कहाँ है? Non-homologous. That produces TDF. What is the full form? Testis determining factor. And after the formation of testis, it produces a hormone that is testosterone. So there is a link. SRY gene, then TDF, then testosterone. So TDF is controlled by your Y. Y-linked genes. Clear? Y is only present in male. तो एक ट्रेट केवल मेल में ही देखेंगे, मेल से मेल को जाएगा, फीमेल में तो Y नहीं है. क्लियर? एंड ये स्किप नहीं करेगा, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर जो है स्किप नहीं करेगा, हर एक जनरेशन में देखें कंटिन्यूअस. तो बच्चा क्लास में पूछता है सर अगर स्किप नहीं करेगा इज इट डोमिनेंट और रिसेसिव? बोलो बेटा ये डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा ही नहीं, बिकॉज डोमिनेंट रिसेसिव कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपका होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे. डोमिनेंट एलीली एंड रिसेसिव एलीली कॉन्सेप्ट कम्स when there is homologous chromosome, because you know
alleles are to alternate from the same gene present in the same locus in a pair of homologous chromosome. As because both are Y is a non-homologous to your X chromosome, that's why both are non-homologous chromosome X and Y. So no questions of recessive and dominant, but ये skip नहीं करता है और dominant recessive concept यहाँ एलिली का नहीं आता है because both are क्वेश्चन आता है non-homologous chromosome. Clear? तो इसलिए खाली मेल से ही ट्रांसफर होगा, फादर से सन, देन टू द ग्रैंडसन, देन ग्रैंड ग्रैंडसन. ओनली मेल्स आर अफेक्टेड. स्कीप नहीं करता है जनरेशन, बट इट डज नॉट फॉलो द डोमिनेंट रिसेसिव एलीली कंसेप्ट बिकॉज X and Y are non-homologous chromosome. An example is your hypertrichosis. मतलब more trichomes मतलब hair on ear, कान में बड़ा बड़ा बाल होना. So long hair लिखे हैं on ear is Y-linked trait और मेल से मेल को ही जाता है. देखो पेडिग्री में मेल से खाली मेल को ही जा रहा है, हर एक जनरेशन में मेल को ही जाएगा. फीमेल इज नॉट अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन. दिस इज Y-linked. क्लियर नाउ? ऑल द पेडिग्री डायग्राम गिवन. नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर में हमें तो एक्सप्लेन किए, अगर दोनों नॉर्मल हो गए, पेरेंट्स बोथ आर नॉर्मल, देन चिल्ड्रन वी आर गेटिंग अफेक्टेड, चिल्ड्रन सन्स एंड डॉटर. देन क्वेश्चन इज आस्क्ड, देन व्हाट अबाउट द पेरेंट्स? दैट इज फादर एंड मदर विल बी व्हाट? दे आर किड. क्लियर? अगर सिंपल वे में सोचना है बेटा कि रिसेसिव क्या होगा? स्किपिंग टेंडेंसी प्रेजेंट होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस डिसेंट होगा. डोमिनेंट कंटिन्यूअस होगा, स्किपिंग टेंडेंसी एब्सेंट होगा. सीधा सन्स डॉटर अफेक्टेड, इनइक्वल फ्रीक्वेंसी ऑटोजोमल. क्लियर? नेक्स्ट एक्स लिंक्ड, फादर इज कंसिडर्ड बोथ एन एक्स लिंक्ड एंड ऑटोजोमल. तो फादर अफेक्टेड, ऑल डॉटर्स अफेक्टेड, सन्स नॉर्मल, एक्स इन डोमिनेंट. फादर अफेक्टेड, ऑल डॉटर्स कैरियर, सन्स नॉर्मल, तो क्या होगा? एक्स इन रिसेसिव. देन वाई लिंक्ड, वाई लिंक में आपको बोले दैट इज ओनली मेल से मेल को ही जाता है, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड. हाइपरट्राइकोसिस, मोर पेडिग्री, तब ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है. सो जितना ज्यादा पेडिग्री होगा उतना रिजल्ट सही होगा. नाउ लेट अस डिस्कस द जीनोटाइप्स used in pedigree for representing the diseased individual and the normal individual. Have a look towards the board, my dear students. Now, number one, for autosomal dominant disorders, for example, myotonic dystrophy, very important example given in NCERT. For autosomal dominant disorders, the diseased person is represented by the genotype capital A or capital A small a. Clear? So disease condition, solid symbol for male and female. Now, therefore, the normal individual will be small a is the genotype for normal person represented by square and circle. Clear? Now, come to the point that dominant disorder, why capital A small a? You know from Mendelism, we have studied Mendelian principle of inheritance. The dominant allele is represented by capital letter. Clear? And the dominant allele can express both under homozygous as well as heterozygous condition. So देखो capital A is homozygous and capital A small is hetero. Clear? Now next, for autosomal recessive disorder, first of all you should know the examples. Autosomal recessive disorder for revision: SCA, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia, cystic fibrosis. These are the 4 examples by the students given in NCERT. So you must by heart all these examples, clear and remember all these examples. It will be helpful to you. Now autosomal recessive disorder में the disease individual क्या होगा? Recessive is represented by small letter, clear, and they can express only under homozygous condition. So disease individual will be small a genotype, तब diseased हो जाएगा, diseased person. Represented, say that is a normal individual will be capital A or capital A small a. So normal is represented by square and circle. Disorder. Come to the next type of disorder, that is X-linked recessive disorder.
पहले आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एक्स-लिंक्ड में कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, माय डियर स्टूडेंट्स। Color blindness we get in human population, that is a male and female, but hemophilia, which is called breeder's disease, remember this thing, hemophilic female is absent or very rare in human population. That is very, very important point. Now these are the examples. And another thing I have told you several times, that this X-linked recessive disorder are more common in males as compared to females. For example, if I ask you in the class that color blindness will be more in male or more in female, so it is more in males. The percentage of color blindness more in male. Can you tell me in the class what would be the percentage of color blindness in male? So answer will be yes, about 8%, and it is less in case of female human, that is about 0.4%. These are the important points here. We are doing also the revision at the same time. Now इसमें हम देखेंगे एक्स लिंक, तो फीमेल जो सेक्स क्रोमोसोम होता है 2x क्रोमोसोम, एक्स एंड एक्स, तो नॉर्मल है फीमेल। अगर एक एक्स क्रोमोसोम में, दोनों में से एक एक्स क्रोमोसोम में रिसेसिव एलील, मतलब स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर स्मॉल सी, दैट रिप्रेजेंटिंग सपोज योर कलर ब्लाइंडनेस। सो अगर सिंगल डोज में रहेगा, सिंगल रिसेसिव एलील रहेगा, दोनों एक्स में नहीं होकर एक एक्स में रहेगा, so female is said to be your carrier female, means it will not express the disorder, it will carry the disorder. So carrier female always normal. Clear? Now the female will be disease, X-linked recessive disease तभी शो करेगा, for example color blindness, दोनों एक्स क्रोमोसोम में अगर रिसेसिव एलील रहेगा, तो रिसेसिव एलील इन डबल डोज में हो रहा है, एंड दिस कंडीशन इज योर होमोजाइगस कंडीशन, माय डियर स्टूडेंट्स. So tell me, female can express the X-linked recessive trait under which condition? Heterozygous or homozygous or hemizygous? The answer will be homozygous condition. इसको हम बॉक्स कर दें. And the disease, do you know, my dear children, that is solid symbol of the sphere. Now carrier also symbol, you know, that is a carrier female. देखो इसमें सिंगल डोज में रहने से होता है, तो ये सर्कल है with a dark. In case of human male, X-linked recessive traits in human male में देखो, तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम XY, इसमें कोई एलील अगर नहीं रहेगा तो नॉर्मल रहता है. अभी अगर सिंगल रिसेसिव एलील रहेगा, सपोज स्मॉल सी कलर ब्लाइंडनेस दी, सपोज दैट सिंगल डोज में रहने पर भी मेल विल एक्सप्रेस. तो मेल में अगर दोनों में से एक्स में एक ही एक्स होता है, तो एक एक्स में अगर आपका रिसेसिव एलील रहेगा एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में, तो ये एक्सप्रेस करेगा. तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन. सो माय डियर चिल्ड्रन, द मेन कंक्लूजन वी आर गेटिंग दैट एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इज एक्सप्रेस्ड इन फीमेल अंडर होमोजाइगस कंडीशन, एंड इन मेल इट इज एक्सप्रेस्ड अंडर हेमीजाइगस कंडीशन. आर यू गेटिंग मी? Do you understand? So they are very important. It's because single recessive allele is expressing the trait in male, so its percentage of occurrence in male will be more as compared to female. Female needs two recessive allele in both the X chromosome to be expressed, to express the disorder. Therefore, the frequency of this disorder. Now come to Y-linked in male. An example is TDF, testis determining factor, and also that is your hypertrichosis, long hair on ear. The gene of these present in your Y chromosome, and the genes that are present in Y chromosome are called Hollandric genes. Clear or not? And they control the trait only in males, and the traits are transferred male to male. I have explained it. Now this अगर Y में हम देख रहे हैं कि जीन रहा है, दैट इज योर होलैंड्रिक जीन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि TDF एंड हाइपरट्राइकोसिस को कंट्रोल करता है, तब ये आपका ट्रेट शो करेगा. लेकिन रहता का Y में रहता है व्हिच इज नॉन होमोलोगस टू X क्रोमोसोम. X and Y chromosomes are non homologous chromosome in male, so it is exclusively present, the gene is present only in male because it is present
in Y chromosome, and Y is present only in male. Are you getting me? Do you understand? So एग्जाम्पल याद रखो, तो हाइपरट्राइकोसिस बोलो या टीडीएफ बोलो, फीमेल में नहीं होगा ना. फीमेल में इसलिए नहीं होता है कि इसका जीन वाई में रहता है, वाई इज एब्सेंट, वाई सेक्स क्रोमोसोम इज एब्सेंट इन फीमेल. सो हाइपरट्राइकोसिस जो ट्रेट है वी वोंट गेट इन फीमेल. अगर आप पूछते हैं सर कभी कि हम लोग देखे हैं कि फीमेल में भी कान में बड़ा बड़ा बाल होता है, तो इट इज ओनली अंडर एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू एबनॉर्मल हार्मोनल फंक्शनिंग. तब clear? Now that I have explained. Now tell me this answer of this question. If I am talking about the female has got 2 X chromosome और दोनों X में, एक में आपका कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव एलील C लिखे हैं, अनदर X में H लिखे हैं, सपोज हीमोफिलिक रिसेसिव एलील है H में रिप्रेजेंट किए हैं. दोनों अगर रहेगा, एक में कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव वाला जी एलील है और इसमें H है हीमोफिलिक का रिसेसिव एलील, तो इसमें एक्सप्रेशन ऑफ द डिजॉर्डर इन फीमेल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एक्सप्रेशन इफ 1X हैविंग योर कलर ब्लाइंडनेस एलीली, अनदर X हैविंग योर हीमोफिलिक एलीली, then what will be the percentage of expression of the disorder in female? Anybody from the class? So there will be 0%. The answer will be 0%. Now tell me why. I'm asking why it will be 0%. ना सर आप बोले थे कि फीमेल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट फीमेल कैन एक्सप्रेस द X-linked रिसेसिव ट्रेट अंडर होमोजाइगस कंडीशन. दोनों में अगर रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील एक्सप्रेस करता है. कहाँ होमोजाइगस कंडीशन? एक है. और डबल डोज में होगा, दैट इज रिसेसिव एलील इन बोथ में होगा. स्मॉल सी दोनों में होता, या स्मॉल एच दोनों में हीमोफिलिक एलील रहता रिसेसिव एलील, तब एक्सप्रेस होगा. इसलिए इसका एक्सप्रेशन भी 0%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Sorry, for your NEET as well as for board examination, X-linked dominant trait is not important. It is a non-NCERT portion. Still, I have explained the X-linked dominant as I have earlier explained X-linked dominant trait. Dominant means it is represented by the dominant allele is represented by capital letter. So you think dominant allele can express both in homozygous as well as in heterozygous condition? It is different from your X-linked recessive. X-linked recessive में दोनों में homozygous में express करता है, लेकिन as because a dominant allele can express both under homozygous and heterozygous condition, so single allele present in X chromosome, single allele is present in X chromosome, or double 2 allele present in X chromosome in female, और मेल में सिंगल डोमिनेंट एलीली रहेगा तो भी एक्सप्रेस करेगा. तो सिंगल एलीली if present in male and female, this X-linked dominant allele, then both will express the disorder. Both will express equally, but it is more common in female. That is, I have written more common in female में defective enamel of teeth and pseudoricket. और ये जो X-linked dominant disorder है बेटा, ये बहुत रेयर होता है ह्यूमन पॉपुलेशन. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the X-linked rare in dominant disorder is rare in human population. Let us discuss some important questions related to pedigrees. So please have a look towards the board, my dear students. This is question number 1. The pedigree is drawn. Is it visible to all of you, my dear students? Yes. This question number 1, the pedigree is there. For example, suppose this pedigree is in the question paper. Now, there are options are there whether what type of disorder or inheritance or what type of disorder this pedigree is showing. You have to put the correct, or you have to find the correct option in the MCQ. Okay, now carefully you see the pedigree. I have already told you, because all the Mendelian disorders are either due to your dominant allele or recessive allele. So first of all, first approach that find out whether it is a recessive disorder or dominant disorder. Okay? So now all the clues, all the key clues or the possibilities or rules I have already explained. I have told you to go through that. Now using those rules or possibilities,
You just say me what would be the answer of this. Now this is a pedigree given. Now every generation you see, I'm explanation I'm giving right hand side you see. In every generation the disorder is expressed continuously. Clear or not? There is no skipping. So what should be the conclusion? I have told you what is the rule. If skipping tendency is absent, then the first will be this a dominant disorder. For dominant disorder, skipping tendency absent means the disorder will be seen in every generation. Here in first generation, father is affected. In the second generation, all are affected. Now in third generation also, there is affected children. So the conclusion will be dominant disorder. Now the second approach, whether it is autosomal or sex-linked. Now you see, I have told you for autosomal, father affected, you see father affected, sons and daughter affected in equal frequency, then the conclusion would be autosomal. So final result coming, the type of disorder, the option, correct option would be what? Autosomal dominant. This is one type of question. Another type of question, sometimes it is asked, what would be the genotypes of the parents or the children in the generations? What would be the genotype of the parents? Now in genotype, so as because it is an autosomal dominant disorder, we have finally found it. So what would be the genotype of the diseased person or individual? I have already explained the genotype. तो डिजीज पर्सन का जो जीनोटाइप होगा इधर कैपिटल ए होगा और कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। अभी आपको ये बताना है क्या होगा उसमें, कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा डिजीज कंडीशन, तो बताना है एक क्वेश्चन। दूसरा नंबर उसका जो नॉर्मल इंडिविजुअल क्या होगा, तो नॉर्मल इंडिविजुअल स्मॉल ए होगा। तो पहले आप जितना नॉर्मल है उसको स्मॉल ए लिख दो। क्लियर और नॉट? ऑल आर स्मॉल ए। ओवर नाउ डिजीज में दो ऑप्शन है आपको, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। आर यू गेटिंग मी? डू यू अंडरस्टैंड? सो इसमें कौन वाला होगा, अभी पेडिग्री को ध्यान से देखो। ये अगर हम लोग क्रॉस करें, फादर इज अफेक्टेड हो रहा है और इधर ऑल अफेक्टेड, तो ये जो क्रॉस है देखो, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए अगर ऐसा क्रॉस होता है तो ये क्रॉस को बोलाते हैं पेरेंटल क्रॉस। जैसे आप देखो इसका एक्सप्लेनेशन, पेरेंटल क्रॉस जो मेंडलिज्म में पढ़े हैं, you know that is pedigree study mainly based upon Mendelian pattern of inheritance. So here you see this cross here, this type of capital A into small a means, if you recall the Mendelian crosses, then capital T into small t is a what? Parental cross. इसमें F1 में क्या आता है? कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी। So the genotype will be capital A parents का होगा मेल का, and female unaffected का small a होगा। Then we are getting this type of pedigree genotypes. Clear now? Now second question को देखो, समझ गया? Now second question को देखिए आप, second नंबर में ये जो पेडिग्री दिया हुआ है, फिर आपको पूछ रहा है क्या होगा, what type of disorder it is and what would be the genotypes of the parents. Now in this case you are getting, this is also the autosomal dominant. ये NCERT में दिया हुआ है, इसका फिगर हम NCERT का ही किए हैं, autosomal dominant का है। फॉर एग्जाम्पल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है इसका एग्जाम्पल। नाउ इसमें आप देखो बेटा, अगर देखो इसमें डोमिनेंट काहे होगा, क्या एक्सप्लेनेशन दिए हैं, हर जनरेशन में आपका डिजॉर्डर देखेंगे, कंटिन्यूअसली आपका ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड, मतलब कंटिन्यूअसली द डिजीज विल बी सीन इन एवरी जनरेशन। तो इसमें देखो फर्स्ट जनरेशन में डिजीज देख रहे हैं, सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज कंडीशन देख, थर्ड जनरेशन में भी डिजीज कंडीशन देख रहे हैं। क्लियर? सो कंटिन्यूअसली जब देख रहे हैं तो क्या होगा, रूल्स के आधार पर डोमिनेंट होगा। तो पहले हम लोग जस्ट उसी का जैसे एक्सप्लेन, डोमिनेंट हो गया। अभी क्या देखना, ऑटोजोमल ना सेक्स लिंक्ड। ऑटोजोमल वही होता है कि अब फादर अफेक्टेड या पेरेंट्स अफेक्टेड, डोमिनेंट में पेरेंट्स मस्ट बी अफेक्टेड बोले थे, अनअफेक्टेड पेरेंट कैन नॉट पास द ट्रेट। सो इट कैन बी मेल और फीमेल, कोई भी पेरेंट, दोनों भी हो सकता है अफेक्टेड, कोई एक पेरेंट भी अफेक्टेड हो सकता है। अफेक्टेड फादर अगर होता है या पेरेंट्स होता है, देन हम लोग देखते हैं दैट इज योर सन्स एंड डॉटर जो होगा इक्वली एक्सप्रेस होता है।
डिजीज कंडीशन होगा। तो देखो इसलिए ऑटोजोमल इसीलिए होगा वो पेरेंट्स अफेक्टेड, देन सन्स एंड डॉटर अफेक्टेड इन इक्वल फ्रीक्वेंसी, 50-50% में इक्वल हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ऑटोजोमल। क्लियर। सो ये भी आपका ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट होने से जीनोटाइप क्या होगा पेरेंट का, अगर जीनोटाइप कैपिटल है स्मॉल ए हो गया, कैपिटल है, लेकिन इस कंडीशन में कैपिटल ए स्मॉल ए इसीलिए होगा कि हम लोग 1:1 रेशियो में देख रहे हैं। अगर हम कैपिटल ए कर देंगे तो बेटा ये वाला देखो सब डिजीज होना, यहाँ तो सब डिजीज नहीं है ना सेकंड जनरेशन में, 1:1 रेशियो में। सो ये डिनोट करता है टेस्ट क्रॉस जैसा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन टेस्ट क्रॉस जैसा है, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए स्मॉल ए, जैसे मेंडलिज्म में पढ़े हैं कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी इज टेस्ट क्रॉस। क्लियर। सो इट इज 1:1 में जब दे रहा है तो इट इज ए टेस्ट क्रॉस। तो देखो नाउ ऑटोजोमल रिलेशन, नाउ चिल्ड्रन सी टू द लास्ट थर्ड एग्जांपल्स। इन दिस केस व्हाट यू आर गेटिंग पेरेंट्स है यहाँ एंड दीज आर द जनरेशन हम देख रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, अफेक्टेड पेरेंट्स नहीं है। सेकेंड जनरेशन में अफेक्टेड देख रहे हैं, फिर इसमें अफेक्टेड देख रहे हैं, तो स्किप कर रहा है देखो। सो देयर इज स्किपिंग टेंडेंसी है यहाँ, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस डिसेंट है। नो डिजीज बट देयर इज डिजीज इन द सेकेंड जनरेशन। अगेन ये देखो नो डिजीज हियर इन द, अगेन देयर इज ए डिजीज। सो स्किप कर रहा है, इस जनरेशन में भी स्किप कर रहा है, यहाँ भी स्किप कर रहा है, और स्किपिंग टेंडेंसी होता है तो व्हाट इज द रूल आई हैव टोल्ड यू, दैट इज योर रिसेसिव हो गया फर्स्ट है। सेकेंड आपको बोले थे सन्स एंड डॉटर इक्वली अफेक्टेड हो रहा है, एंड पेरेंट्स जो होगा नॉर्मली क्या होगा, हेट्रोजाइगस कैरियर होगा। डिजीज भी हो सकता है लेकिन इसमें हम लोग सन्स एंड डॉटर आर इक्वली अफेक्टेड, इक्वल फ्रीक्वेंसी में हो रहा है तो ऑटोजोमल हो रहा है। एंड पेरेंट्स आर ये नॉर्मल दिखा रहा है, बट नॉर्मल से डिजीज हो रहा मतलब दिस पेरेंट्स मस्ट बी योर कैरियर, एंड कैरियर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय योर कैपिटल एंड स्मॉल ए होगा। तो 1:2:1 दिखा रहा है, द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, and the genotypic ratio of monohybrid cross is 1:2:1. So this explanation is just like monohybrid cross, this explanation is just like test cross, and this explanation is just like your parental cross, my dear children. These two pedigree are there in NCERT, but in autosomal dominant parents must be affected. देखो दोनों autosomal dominant parent देखिए affected parent होगा, लेकिन autosomal recessive में parents carrier भी हो सकते हैं और डिजीज भी हो सकते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a pedigree is given, you have to find out the type of disorder here. Now skipping tendency present, then it will be recessive, and skipping tendency absent, then there will be dominant disorder. So the disease is, you see, first of all here out of this 4 generation more tendency of skipping is present here, means it is discontinuous, not continuous. See this one, this is disease condition, there is no disease here, again there is no disease, again the children are diseased. Here also see here, this is parents, father is affected but children, sons are not affected. This also same thing, not affected, affected. So if you see the whole pedigree, my dear students, then there is more tendency we are getting of, that is the generation skipping. Clear or not? Not continuous, it is discontinuous. But in first case you see, that is disease, again disease. Now when you have to find out the recessive and dominant disorder, generally which tendency is more present? It is discontinuous, not continuous. Clear? Many generations we are seeing that is father affected, sons. Now second one, question number 5 you see. Here father affected, clear or not? In first generation, none of the children are affected. When normal female marries to a, that is your diseased male, then none of the children are diseased. Are you getting me? Do you understand? Now in this case, in the left hand side, you see, my dear children, when female is affected, then all the children are affected. So from here you can conclude, when male affected, none of the children affected. But when female affected, all affected.
And question number 6, you see. Here carrier female is there. When carrier female transfer the character to male, I have already taught you. Carrier female to male progeny, and it is what? X-linked recessive. Similarly, when father affected and that is daughters or all daughters are carrier, I have taught the rule, then it is X-linked recessive. Another point is also you can consider while seeing the pedigree. Recessive dominant, after that you can think and quickly you can see the pedigree and find out whether it is Y-linked or not. So it will be easy. First of all you find out Y-linked. We are talking about X-linked. Y-linked होने से क्या होगा बेटा? मेल से मेल को जाता है. सो तीनों पेडिग्री में देखो, दोनों पेडिग्री में, तीनों पेडिग्री में हम देख सकते हैं मेल से ओनली मेल को जब जाता है, मेल टू मेल ओनली एंड वाई-लिंक. सो दिस मेल टू फीमेल मेल जा रहा है, वाई-लिंक नहीं. यहाँ भी वेरीफाई कर सकते हो, मेल से खाली मेल को नहीं जा रहा है, इट इज नॉट वाई-लिंक. दिस ऑल्सो देयर इज नॉट वाई-लिंक. सो फाइनल टच दे देंगे हम लोग, ऑप्शन आ जा रहा है, दैट इज योर व्हाट? दिस इज योर X-linked recessive. This one is cytoplasmic inheritance and first one is autosomal recessive. Now come to 7th number, right hand side you see. Now come to 7th number, pedigree given. This pedigree is given. Now you have to find out the type of pedigree here. What type of genetic disorder is being transmitted hoga? Or a father affected, all daughters are affected, then there will be X-linked dominant. Now the 8th number question you see. Given pedigree represents autosomal dominant disorder. Yeah, then what is the percentage of affected offspring? It is autosomal dominant, percentage of affected offspring of marriage between P and Q. This is P and Q. तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? जितना नॉर्मल स्मॉल ए होगा, ए भी स्मॉल ए भी स्मॉल ए, नॉर्मल भी स्मॉल ए. क्लियर? सो व्हेन स्मॉल ए नॉर्मल है तो P and Q आर नॉर्मल. सो हाउ विल रिप्रेजेंट इट? स्मॉल ए नॉर्मल. ना नॉर्मल with normal, अगर मैरिज हो रहा है, मेटिंग हो रहा है, तो नॉर्मल विल बी प्रोड्यूस. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी परसेंटेज ऑफ डिजीज्ड और अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग. नॉर्मल इनटू नॉर्मल को दोनों को अगर मैरिज हो रहा है, मेटिंग, सो द चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल. सो द परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन विल बी 0%. Okay children, got it? Now this is all about. Now come to the final touch of this topic, that is some of the possibilities in brief. If you are unable to cope up with the rules I have given earlier in detail, just go through quickly to these 4 points and you can also solve the pedigree. Thanks to all. Hope this topic will be helpful for your upcoming examinations, that is board, NEET and other competitive examinations. I'll be coming soon with a new topic in the next week. Till then, do subscribe, like and share. Have a wonderful day. God bless. See you soon.